Okay, so the recording has started. Inshallah, today we are going to start with chapter number 15, which is kinetics of a particle, and we will be discussing the impulse and momentum method for kinetic analysis. Now, just a quick review of what we have done up till now, ताकि kinetics का ये वाला chapter समझने में आपको आसानी हो. At the start, we started with chapter number 12, which is kinematics of a particle, and as the name of this chapter indicates, kinematics of a particle में हमने किया क्या था कि we basically relate displacement, velocity and acceleration of the particle in various coordinate systems. हमने उनकी displacement, velocity और acceleration को जो है वो relate किया था. Then we started with kinetic analysis in chapter number 13. Now from chapter number 13 till chapter number 15, these are various methods of performing the kinetic analysis. Initially in chapter number 13, we started with force acceleration method of kinetic analysis. Now as the name indicates, force acceleration method means you are going to relate forces with accelerations of a particle. So whenever in any problem you need to find a relationship between F and A, you are going to use the force acceleration method of kinetic analysis. Then in chapter number 14, we discussed the work energy methods for kinetic analysis. Work energy method में we discussed two major topics. One is the principle of work and energy, the other one is the conservation of energy principle. Both these principles of kinetic analysis are used for relating forces, velocity and displacement. So whenever you want to find out a relationship between F, V and S, you can use these work energy methods for kinetic analysis. The only difference in using these two methods is if there is no non-conservative force acting on that particle. Non-conservative force से क्या मुराद है? Either an applied force or force of friction. तो अगर उस particle के ऊपर there is no non-conservative force acting, then you can solve that problem using the conservation of energy principle, which says that the total energy of the system remains constant provided that there is no non-conservative force acting on that particle. So the sum of initial kinetic and potential energy should be equal to the sum of final kinetic and potential energy. So you can apply this conservation of energy principle on a particle provided that there is no applied force or force of friction which is acting on that particle. However, if there is an applied force or force of friction involved, then instead of using the conservation of energy principle, you can solve that problem using the principle of work and energy, which states that the initial kinetic energy of a particle plus work done by all the forces that are acting on the particle from position 1 to position 2 should be equal to the final kinetic energy of a particle. ये दो principles हमने पढ़े थे work energy methods में for solving various problems involving forces, velocity and displacement. Now today inshallah we are going to start with chapter number 15, which is kinetics of a particle, and we are going to discuss the impulse and momentum method for kinetic analysis. Now probably मोमेंटम और इम्पल्स की डेफिनेशन से आप लोग थोड़ा बहुत फिजिक्स में वाकिफ होंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज इन डिटेल इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स टुडे. द इम्पल्स एंड मोमेंटम मेथड ऑफ काइनेटिक एनालिसिस इज गोइंग टू बी यूज्ड टू रिलेट फोर्सेस, वेलोसिटी एंड टाइम. सो व्हेनेवर इन एनी problem you want to find out a direct relationship between F, V and T, you can use this impulse and momentum method for kinetic analysis of that problem. तो ये तीन different method हैं kinetics के. जब आप ये तीनों method पढ़ चुके होंगे, यानी आज जब हम चैप्टर नंबर 15 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ख़त्म कर लेंगे, तो प्रोबेबली आपके पास चॉइस ओपन होगी. आप जिस प्रॉब्लम पे भी जो बेहतर मेथड समझते हैं, जो शॉर्टेस्ट मेथड समझते हैं, उसको देखते हुए यू कैन अप्लाई दैट मेथड ऑन दैट प्रॉब्लम. कोशिश करनी होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड है वो आप अप्लाई करें, जो आपको डायरेक्ट सोल्यूशन दे दे, बजाय इसके कि आपको सोल्यूशन 3 या 4 स्टेप्स में जो है वो करना हो. तो ये काइनेटिक्स के जो तीनों मेथड हैं, ये आपको प्रोबेबली तमाम काइनेटिक की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जो है वो दे रहे होंगे, लेकिन आपने खुद जज करना होगा कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड जो कि आप उस प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. Okay, the topics which we are going to cover in this chapter are shown to you here. That today we are going to start with principle of linear impulse and momentum. Probably tomorrow जो है वो हम थोड़ा सा conservation of momentum की बात करेंगे, and inshallah next week we are going to cover
इम्पैक्ट, जिसमें हम दो तरह के इम्पैक्ट देखेंगे. वन इज द सेंट्रल इम्पैक्ट, द अदर वन इज द ऑब्लिक इम्पैक्ट. तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड में या शायद उससे नेक्स्ट वीक के स्टार्ट तक आपका ये इम्पल्स एंड मोमेंटम खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी. ऑल्दो टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम बचेगा, 3 से 4 हफ्ते होंगे रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स के लिए, लेकिन अगर आपने पार्टिकल की डायनेमिक्स समझी हुई है तो रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा समझना. सो इंशाल्लाह टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम. एक और चीज़ जो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें फोर्स एक्सेलरेशन मेथड जो है, सिंस force is a vector quantity and acceleration is a vector quantity as well, so basically force acceleration method is a vector method, meaning that when you are applying that force and acceleration method on any problem, then you should apply the equation of motion, जो कि force acceleration method की वाहिद equation है, then you should apply that equation of motion in some coordinate system along some axis. इसके मुकाबले में if you are talking about work energy methods, whether it is the principle of work and energy or the conservation of energy principle, चूंकि वर्क और एनर्जी दोनों आपके पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, सो बेसिकली वर्क एनर्जी मेथड्स आर स्केलर मेथड्स, और वो आप किसी एक्सिस के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई करने के बजाय आप उस पार्टिकल की किसी दो पोजीशंस के दरमियान जो है वो अप्लाई करते थे. अब ये जो तीसरा मेथड है इम्पल्स एंड मोमेंटम मेथड, इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो अगेन यू कैन नॉट अप्लाई दिस इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल on some positions. Rather, you need to apply this impulse and momentum principle on that particle along some axis in some coordinate system. वर्क एनर्जी की तरह आप दो पोजीशंस के दरमियान इसको अप्लाई नहीं करेंगे, रादर आप इसको फोर्स एक्सेलरेशन की तरह एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे, बिकॉज इट इज अगेन अ वेक्टर प्रिंसिपल. Okay, with this, let us move to our first slide of today's topic. The equation of motion for a particle m can be written as summation f equal to ma. So अगर हम kinetics की बात करें, आपके जो तीनों methods हैं kinetics के वो इसी equation of motion से derive हुए हैं. जो आपकी force acceleration method है वो तो directly equation of motion ही है. इसके अलावा work energy भी हमने इसी equation of motion से derive किया था, और हमारे पास जो impulse and momentum principle है वो भी इसी equation of motion से जो है वो derive हुआ हुआ है. So the equation of motion for a particle can be written as summation f equal to ma, and we know that acceleration is defined as dv over dt. So by taking this dt towards the left hand side of this equation, the equation would become f dt equal to m dv. Now integrating both sides of this equation with respect to the limits which are shown here, that is at time t1, the velocity is v1. So at time t1, this velocity is v1, which is shown to you here, and time t2, the velocity is v2. Now on the right hand side, since you are integrating with respect to v, dv को जब integrate करेंगे तो v बाहर आ जाएगा, so the right hand side would become mv2 minus mv1. These terms on the right hand side are basically termed as momentum terms. तो आपके पास इस इक्वेशन नंबर 2 में जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स आ रही हैं, which are of the form mass times velocity, they are basically momentum terms, whereas the terms which are on the left hand side of this equation, which represents forces into time which are acting between t1 and t2, so these terms are known as impulse. So this particular equation is termed as the principle of linear impulse and momentum. It provides a direct means of obtaining particles' final velocity v2 after a specified time period when the particle's initial velocity is known to us and the forces acting on the particle are either constant or can be expressed as a function of time, and those forces are also known to us. So अगर हम इस principle को देखें तो this principle of impulse and momentum is basically relating forces, time and velocity. So these are the three terms which are being related using the principle of impulse and momentum. तो जब जब आपको f, v और t का relationship चाहिए होगा, you are going to use this principle of impulse and momentum. इसमें जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो जिस तरह अभी बात हुई थी, द फोर्सेस विच आर ऑफ द फॉर्म mass times velocity are termed as linear momentum of a particle. Since m is a positive scalar quantity, it means के ये चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन टोटली डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन पे. जिस डायरेक्शन में भी उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, उस पार्टिकल का मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा. मोरोवर द यूनिट्स ऑफ momentum are going to be the units of mass times velocity. So mass के units आपके पास kg होते हैं, velocity के मीटर पर सेकेंड होते हैं, तो ओवरऑल जो momentum के units आएंगे आपके पास वो kg मीटर पर
सेकेंड आएंगे. So whenever we talk about linear momentum, it is basically the product of mass and velocity. It is a vector quantity. Its direction totally depends upon the direction of velocity. उस particle की जिस direction में भी velocity होगी, momentum भी उसका उसी direction में होगा. मसलन अगर एक particle जो है it is traveling along the positive x-axis, so it should have a positive momentum along the x-axis. If the particle is traveling towards the negative x-axis, then it should have a negative momentum along the x-axis. So ये momentum की definition आ जाएगी. जहाँ तक ताल्लुक units का है तो it should have units of kg meter per second. इसके मुकाबले में the terms which are shown to you on the left hand side of this equation, which are of the form force multiplied by time, these terms are basically termed as linear impulse. So the integral I equal to f dt in equation 2 is defined as linear impulse. Again, it is a vector quantity और इसमें चूंकि टाइम तो स्केलर है तो इट मीन्स के इम्पल्स टोटली डिपेंड करेगा फोर्स के डायरेक्शन पे. जिस डायरेक्शन में भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में ही आपको इम्पल्स मिलेगा. फॉर एग्जांपल, इफ यू अप्लाई सम फोर्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस, तो आपको उस फोर्स की वजह से जो इम्पल्स मिलेगा वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही मिलेगा. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच मेजर्स द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ड्यूरिंग द टाइम द फोर्स एक्स. Since time is a positive scalar quantity, it means that the impulse vector acts in the same direction as the force and its magnitude has the units of force and time. फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन होते हैं. टाइम के यूनिट क्या हैं? सेकेंड्स हैं. सो क्या ये इम्पल्स और मोमेंटम की यूनिट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं? आर दीज टू यूनिट्स इक्विवेलेंट? यस सर. कैसे? न्यूटन इज बेसिकली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg meter per second square. So second से कट गया, overall unit would become kg meter per second, which are same as those of linear momentum. तो आपके units consistent हैं. इस equation के सिर्फ लिखने का तरीका different है क्योंकि momentum हम define कर रहे होते हैं mass times velocity से, तो हम उसको kg meter per second से define करते हैं. Impulse जो है उसको हम define करते हैं as a product of force and time. Force के unit Newton है, टाइम के सेकंड है, तो इनको हम न्यूटन सेकंड के साथ जो है वो डिनोट करते हैं. सो इफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर आपके पास ये जो f है इट इज बीइंग डिफाइंड टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो इफ f इज डिफाइंड टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन यू कैन इंटीग्रेट दैट फंक्शन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इम्पल्स. However, if the force is constant, then the impulse is going to be simply f dot delta t. Is this point clear to all of you? Yes sir. yes. So this is the principle of impulse and momentum which is being defined by equation number 2. However, इस principle को जब हम अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में तो हम उसको इस फॉर्म में अप्लाई करते हैं कि हम इस mv1 which is this momentum term, इसको जो है वो towards the left ले आते हैं. राइट पे ये नेगेटिव साइन के साथ है, जब हम इसको लेफ्ट लाएंगे तो it would be with a positive sign. So overall this principle would become mv1, which represents the initial momentum of a particle plus summation f dt, which represents the sum of all the impulses that are acting on the particle, should be equal to mv2, which is the final momentum of the particle. So we can express this principle of impulse and momentum as the initial momentum of a particle plus sum of all the impulses that are acting on this particle from t1 to t2 should be equal to the final momentum of a पार्टिकल. अगर हम इसकी एनालॉजी देखें उसके साथ प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी के साथ, तो बड़ी हद तक ये प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी से मिलता हुआ है, सिर्फ सिवाय इसके कि जहाँ जहाँ आपके पास काइनेटिक एनर्जीज वाली टर्म आ रही थी वहाँ यहाँ मोमेंटम वाली टर्म्स आ गई हैं, जहाँ जहाँ वहाँ वर्क वाली टर्म आ रही थी वहाँ यहाँ इम्पल्स वाली टर्म आ गई है. सो जो इनिशियल आपके पास प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी था वो क्या था कि इट रिप्रेजेंट्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज in moving the particle from position 1 to position 2 should be equal to the final kinetic energy of the particle. इसी तरह impulse and momentum कहता है कि the initial momentum of a particle जो कि आपके पास L1 की फॉर्म में आ गए, so the initial momentum of a particle plus sum of all the impulses that are acting on this particle from T1 to T2 should be equal to the final momentum of a particle. Now these three terms are illustrated in the graph on the impulse and momentum diagram as shown to you here, कि जितना भी उस पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम था यानी जिस डायरेक्शन में भी उसकी वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में उसका इनिशियल मोमेंटम आएगा, प्लस उसके ऊपर जो भी इम्पल्सेस एक्ट की उसकी वजह से, इन इम्पल्सेस की वजह से इस पार्टिकल का जो फाइनल मोमेंटम है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ जाएगा. जिस तरह प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी
आप अप्लाई कर सकते थे ऑन अ सिंगल पार्टिकल एज वेल एज ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बिल्कुल उसी तरह आप ये इम्पल्स और मोमेंटम वाला प्रिंसिपल भी सिंगल पार्टिकल के अलावा आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टू पार्टिकल्स विच आर बीइंग कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग रोप्स एंड पुलीज। उसमें फिर आपके पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम प्लस सम ऑफ ऑल द इम्पल्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आ जाएगा। और सिस्टम के जब मोमेंटम की हम बात करते हैं तो उसमें अगर दो पार्टिकल्स हैं तो दोनों के मोमेंटम को हम सम कर लेंगे। ओके, इससे पहले जिस तरह बात हुई थी, प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम है, इट इज़ अ वेक्टर प्रिंसिपल, वेक्टर इक्वेशन। सो जनरली जब वेक्टर इक्वेशन होती है तो उसको आप अप्लाई करते हैं किसी ना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलॉन्ग। सो अगर हम इसको एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अप्लाई करना चाहें तो ये उसकी तीन कंपोनेंट इक्वेशंस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंसीडरिंग इट अलोंग द एक्स एक्सिस, देन द इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस plus sum of all the impulses that are acting along x-axis should be equal to the final momentum along x-axis. इसी तरह y-axis के along भी हम इसको लिख सकते हैं और z-axis के along भी लिख सकते हैं। Moreover, we can also write the same principle of impulse and momentum along the ntb axis as well as along the r theta z axis। यानी हम बाकी coordinate system में भी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन for the time being we are only going to consider this xyz coordinate system और उसके impulse और momentum के हवाले से हम बात कर रहे होंगे। Is this point clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, तो इम्पल्स और मोमेंटम की टर्म्स समझ आ गई हैं, इनके यूनिट्स क्या होते हैं, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये आई होप कि ये चीज़ें तमाम लोगों को क्लियर हैं। Yes, sir. समझ आ गया। Okay, so moving on to the problems relevant to this topic, इंशाल्लाह आज हम सिर्फ और सिर्फ दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, प्रोबेबली एग्जाम्पल 15-1 और 15-2, और कल की क्लास में फिर हम इसके मुख्तलिफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के हवाले से बात कर रहे होंगे और कल ही फिर हम जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी जो है स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम का है तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। अभी आप देखेंगे जो हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे तो अगर आपको टर्म समझ आई हुई हैं तो इम्पल्स एंड मोमेंटम का प्रिंसिपल अप्लाई करना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। Okay, starting with the first example, which is example 15-1, जिसमें हमारे पास एक particle है which is this 100 kg stone, and this stone is originally at rest on a smooth horizontal surface. It means that for this particular example, we are not going to include the force of friction in our analysis because the surface is smooth. If a towing force of 200 Newton acting at an angle of 45 degrees is applied to this stone for a time period of 10 seconds. So आपने इस stone के ऊपर एक towing force apply की which is force of 200 Newton at an angle of 45 degrees for 10 seconds. You need to determine what should be the final velocity of this stone after this 10 seconds time interval, कि stone कितनी velocity से travel कर रहा होगा, and secondly what should be the normal force which this surface would be exerting on this stone during this time interval. तो दो चीजें आपने find out करनी है, one is the final velocity of this particle, the other one is the normal force which the surface would be exerting on this particle. Okay, अगर हम मुख्तलिफ variables या मुख्तलिफ quantities जो इसमें involve हैं उनकी तरफ नजर दौड़ाएं तो देर आर सम फोर्सेस जिसमें आपका वेट दिया जाता है, ये अप्लाइड फोर्स है जो एक्ट कर रही है। सो फोर्सेस आपकी यहाँ इन्वॉल्व हैं, प्लस आपसे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है और ये 10 सेकंड का टाइम इंटरवल आपको गिवन है। सो एफ V and T are basically involved here. So the principle of impulse and momentum will give you a direct solution of this problem. However, later we are also going to see कि हम प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम के अलावा क्या कोई और मेथड भी अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सिंस एफ वी एंड टी आर इन्वॉल्वड हियर, सो इट मींस दैट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड डायरेक्टली यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम. नाउ इन ऑर्डर टू अप्लाई द principle of impulse and momentum, first of all we need to draw the free body diagram of this stone. In order to draw the free body diagram we need to isolate this stone from the surrounding, और isolate करने के बाद हम इसके जो isolate करने के साथ साथ connections खत्म कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई reaction force मिल रही होगी. So one force which is acting on this stone is the applied force of 200 Newton. So हमने इसको show कर दी है. इसके अलावा the weight of this particle would be acting downward, and once you remove the floor connection you are going to get a normal reaction force NC in the upward direction. So these are the
three forces which are acting on this stone, there shouldn't be any force of friction involved because the surface is smooth. Okay, now in order to apply the principle of impulse and momentum, let us define the axis first of all. We are going to take the conventional xy axis in order to solve this problem. So applying the principle of impulse and momentum, that principle of impulse and momentum says that if you are applying it along the x-axis, so that principle says that the initial momentum along x-axis, which is equal to mvx1 plus sum of all the impulses which are acting along x-axis, जिसको हम लिखते हैं by the formula summation integral t1 to t2 f dt, and since we are talking about x-axis, so this x is going to be equal this f is going to be equal to fx. So mvx1 plus summation fx dt should be equal to mvx2. So this is the principle of impulse and momentum which is being applied on this particle along the x-axis. Now एक एक करके हम in terms को देखते हैं. What should be the initial momentum of this particle mvx1? 0. Since the particle was at rest, so the initial momentum of this particle is going to be 0. mvx1 वाली term आपकी 0 हो जाएगी. Now, as far as the final momentum of this particle is concerned, this should be equal to mv2, where m is the mass and v2 is the velocity of this particle at t equal to 10 seconds. Okay, now what forces should be contributing towards these impulse term? कौन-कौन सी forces x-axis के along act कर रही हैं? Is component of towing force only. The component of towing force only, which is going to be this component, which is say 200 cos of 45. So how much impulse would this force create? 200 F into del T. So since it is a constant force, 200 cos 45, impulse क्या होता है? Force को हम time से multiply कर देते हैं, so multiply it with delta t, which is 10 seconds. ये आपके पास impulse आ जाएगा. What should be the sign of this impulse? ये force positive x-axis के along है या negative x-axis के along? Positive. Positive. Since this force is acting along the positive x-axis, so it would be creating a positive impulse. 0 is the initial momentum plus 200 cos 45 into 10 should be equal to mv2. So once you solve it, the velocity would comes out to be 14.14 meter per second. So this is going to be the velocity of this stone after 10 seconds of application of this force. I hope that everything is clear to all of you. कोई query हो आपकी up till this point, so you can ask now. Clear, sir. Okay, now let me ask you some questions. Let us suppose that we need to solve it using the equation of motion rather than the principle of impulse and momentum. ठीक है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और आपने कहा कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन. सो इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एनीवन स्टूडेंट जो बता सके? सर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. ओके, सो इट मींस के मैं समेशन fx इक्वल टू max अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर और यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, क्योंकि फोर्सेस तो इस पे एक्ट कर रही है 20 cos 45, तो आपके पास 20 cos 45 से फोर्स एक्ट कर रही है, उससे आप एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगी. ऐसे ही है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v by t, तो उधर से t v मालूम कर सकते हैं. Okay, so constant acceleration मिली तो you should apply some constant acceleration equation here. So which constant acceleration equation you are going to apply on this stone in order to relate or find the velocity v? Vf equal to vit. So it is going to be v equal to v naught plus act, isn't it? यहाँ आपके पास v naught जो है वो 0 आ जाएगा, ac आपके पास वो constant acceleration है जो आपके पास equation of motion से आई है और टाइम आपके पास 10 सेकेंड है, so it will give you directly the velocity और आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, it will give you the same answer which is 14.14 मीटर पर सेकेंड. लेकिन हुआ क्या कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर रहे थे तो we have solved this question using 2 steps rather than one single step जो कि आपको लीनियर इंपल्स एंड मोमेंटम के प्रिंसिपल से मिल रहा है. इज दिस पॉइंट क्लियर? दोनों तरीकों से ये सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इंपल्स एंड मोमेंटम आपको सिंगल स्टेप में सोल्यूशन दे रहे हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ये पॉइंट क्लियर है हर एक को?
Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ लेट अस सपोज के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आया और किसी स्टूडेंट के जहन में सिर्फ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था, उसने कहा मैं इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. सो इफ यू आर यूजिंग द वर्क एनर्जी मेथड फॉर सॉल्विंग दिस प्रिंसिपल, which work energy method which you are going to use, either the principle of work and energy or the conservation of energy? Working energy method. Why not conservation of energy? सर वो भी कर सकते हैं लेकिन उसमें सर पोटेंशियल एनर्जी का कोई वो नहीं है. Just a minute, Tariq. कंजर्वेटिव फोर्सेस भी सर वो भी. Tariq, एक second. Can we use conservation of energy here? जी जवाब दें. Can we use conservation of energy here? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में शर्त क्या थी कंजर्वेशन के लिए? सर डिस्टेंस फाइन. नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करने की शर्त क्या है कि देयर शुड नॉट बी एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल. तो क्या यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है कि नहीं? यस सर, एक अनबैलेंस्ड फोर्स है 200 न्यूटन. Because it is applied force and applied force is an example of a non-conservative force. So जब आपकी non-conservative force act कर रही हो, it means कि आप फिर conservation of energy वाला principle नहीं अप्लाई कर सकते. मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आप वर्क एनर्जी मेथड के थ्रू जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यू कैन नॉट use the conservation of energy principle here because of this 200 Newton force which is a non-conservative force. It means कि फिर आप इसको सॉल्व करेंगे using the principle of work and energy जो कहते हैं initial kinetic energy plus work done by all the forces should be equal to the final kinetic energy. ऐसा ही है. यस सर. अब मुझे ये बताएं कि इसको काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म तो ठीक है, इनिशियल रेस्ट पे था तो T1 आपके पास 0 हो गई, T2 हाफ mv² हो जाएगा. वर्क डन वाली टर्म आप कैसे डिटरमिन करेंगे? थोड़ा सा मुझे आइडिया दे सकते हैं? सर एक्सेलरेशन फाइंड करके कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन यूज करके फाइंड करेंगे. क्योंकि वर्क, अच्छा कौन सी इनमें से कौन सी फोर्सेस वर्क की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगी? सर 200. तो 200 का कंपोनेंट जो कि 200 cos 45 है, ऐसे ही है. सो वर्क इसका हो जाएगा 200 cos 45 इंटू एस. पॉजिटिव वर्क होगा नेगेटिव वर्क होगा? पॉजिटिव सर. इन द पॉजिटिव डायरेक्शन होगा बिकॉज आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में. सो प्लस 200 cos 45 इंटू एस. ये जो एस है ये कहां से आपके पास आएगा अगर आप वर्क एनर्जी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो इट मींस कि आप पहले इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके एक्सेलरेशन निकालेंगे यहाँ से. उसके बाद आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर देंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन जो कि थी s इक्वल टू एस नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसमें s माइनस एस नॉट आपका s हो जाएगा, वी नॉट टी आपकी 0 हो जाएगी बिकॉज इनिशियली वो रेस्ट पे था. तो हाफ ए टी स्क्वायर से आपको ये s की वैल्यू मिलेगी और फिर आप उस s को यहाँ इस्तेमाल करेंगे. तो कहानी कोई ज्यादा लंबी नहीं हो गई. यस सर. जबकि सिंगल स्टेप में यहाँ इंपल्स एंड मोमेंटम से आपको सोल्यूशन मिले. तो काइंडली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट वुड बी योर जजमेंट. आंसर तीनों से आपको ये 14.14 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा वेलोसिटी, लेकिन आपने अपना टाइम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करना होता है. तो एक प्रॉब्लम जो कि तीनों काइनेटिक के मेथड से हल हो रहा होगा, और जनरली काइनेटिक के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो तीनों तरीकों से हल किए जा सकते हैं. आपने खुद जज करना होगा कि मैं कौन सा मेथड अप्लाई करते हुए अपना टाइम जो है वो बचा सकता हूं. वो आपकी टोटली जजमेंट होगी, और वो जजमेंट आप किस तरह कर रहे होंगे, जितनी ज़्यादा आप तीनों मेथड्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेहतर आइडिया होगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स किस किस मेथड के साथ जल्दी सॉल्व की जा सकती हैं. सो फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काइंडली कोशिश करिएगा कि ये तीनों मेथड्स आपको आते हों, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक मेथड की तैयारी करते हैं प्रोबेबली प्रॉब्लम तो वो सॉल्व हो जाएगा उस एक मेथड से, लेकिन इशू क्या होगा कि हो सकता है मैंने उस सवाल के लिए 10 मिनट रखे हों, आप आधा घंटा उस पर लगा के जवाब निकाल लें, तो आप किसी और क्वेश्चन का टाइम जो है वो खा रहे होंगे. तो कोशिश करें कि जो बेस्ट मेथड है उसको इस्तेमाल करें. एग्जाम में मैं कहीं ये नहीं लिखूंगा कि ये प्रॉब्लम आपने इससे सॉल्व करनी है, या अगर आपने लंबे मेथड से सॉल्व किया तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे. अगर लंबे मेथड से भी सही सॉल्व किया तो आपको मार्क्स तो पूरे मिलेंगे, लेकिन आपका टाइम प्रोबेबली फिर सही तरह मैनेज नहीं हो पाएगा. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. अच्छा चलिए, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? इट सेज कि यू नीड टू डिटरमिन द नॉर्मल फोर्स which this surface exerts on the stone during this time interval. So
अगेन चॉइस मेरे पास है, एक तो मैं इम्पल्स एंड मोमेंटम भी इस्तेमाल कर सकता हूँ या किसी और तरीके से भी मैं ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फाइंड कर सकता हूँ। सर वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करके देख लेंगे। By mc applying is the equal to equation, W by applying the equation of motion along the y-axis, I can get that as well. So लेकिन चूंकि यहाँ मैं impulse and momentum यूज कर रहा हूँ, so directly मैं free body diagram पे impulse and momentum का ही principle apply करता हूँ, जो कहता है कि initial momentum along y-axis plus sum of all the impulses that are acting along y-axis should be equal to the final momentum along the y-axis. जहां तक ताल्लुक इनिशियल मोमेंटम का है, so since the particle was at rest, तो आपके पास ये जो इसका इनिशियल मोमेंटम आएगा वो 0 आ जाएगा. व्हाट अबाउट Vy2? वो भी 0 होगा. Because the particle is moving along the x-axis only, तो उसका मोमेंटम x-axis के along ही आएगा. Y component of final momentum is also going to be equal to 0. So आपके पास ये दोनों टर्म 0 हो गई. जो फोर्सेस y-axis के along इम्पल्स बना रही हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं? अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम को देखूं, weight, normal force and vertical component of the applied force. So these are the three forces: weight, normal force and the vertical component of the applied force. इसमें normal force और vertical component of applied force positive y direction में, so they would be creating a positive impulse. Weight is acting towards the negative y axis, so it would be creating a negative impulse. कितना इम्पल्स होगा? आप NC को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें. सो NC जो आपकी फोर्स है उसको आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास इम्पल्स आ गया ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. वेट को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, आपको वेट की वजह से इम्पल्स मिल जाएगा. नेगेटिव साइन यहाँ क्यों आया? क्योंकि वेट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इम्पल्स क्रिएट करे, बिकॉज वी आर टेकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड. इसके अलावा आपके पास अप्लाइड फोर्स है 200 sin 45, ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इम्पल्स मिल जाएगा. अच्छा चलें, एक छोटा सा सवाल, अगर यहाँ से मैं 10 हटा दूं तीनों टर्म्स के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस के वो बैलेंस समेशन Fy बन जाएगा. सो आपकी अपनी चॉइस है, आप इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल लगा लें या सिंपली आप समेशन Fy इक्वल टू 0 लगा लें. आपके पास NC की वैल्यू आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 839.6 न्यूटन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. कोई इशू जो आप पूछना चाहते हैं एग्जांपल 15-1 के हवाले से? Okay, moving on to our second example for today, which is example 15-2, जिसमें again we have a particle which has a weight of 50 pounds and it is traveling down this incline with a speed of 3 feet per second. So this particle is already traveling with a velocity of 3 feet per second down this incline. When this force P having a variable magnitude of 20 t pounds is being applied on this particle, you need to determine the crate's final velocity after 2 seconds of application of this force. Initially, जिस तरह भी बात हुई, the crate is already traveling at a speed of 5 feet per second, and the coefficient of kinetic friction between the crate and the plane is also given to you as 0.3. It means that the plane is not smooth. Rather, यहाँ आपके पास force of friction भी जो है वो involve है, so आपको उसको भी अपनी analysis में शामिल करना पड़ेगा. Okay, so quickly drawing the free body diagram of this particle. The weight of this particle would be acting vertically downward. The normal reaction force would be acting normal to the contacting surface between these two planes. The applied force would be acting along the inclined plane, जिस तरह आपको शो किया गया है. Is there any other force जो कि हमें free body diagram पे शो करनी चाहिए? सर वेट वो तो शो हो गया ऑलरेडी. Friction force. Friction force. So since the particle is moving downward, so friction force is going to act up this incline. So the axes which we are going to use here for our analysis are these axes. That is, I am going to take x-axis along the incline and y-axis is going to be defined perpendicular to that incline. So applying the principle of impulse and momentum along the x-axis, that principle says that the initial momentum along x-axis plus sum of all the impulses which are acting along x-axis during time interval t1 to t2 should be equal to the final momentum along the x-axis. So this is going to be the equation or principle of impulse and momentum which is being applied along the x-axis, and I am taking positive x-axis down that incline. Okay, what should be that initial momentum along x-axis? Can you identify it?
MV 3 इंटू मैस, और मैस आपके पास क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 32.2, वो आपके पास मैस हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, एंड सिंस दिस मोमेंटम इज along down the incline, जो कि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, so we have written here it with a positive sign. Okay, now coming to the terms of impulses, which of these forces would be creating impulses in this case? Sir, force of magnitude P. अप्लाइड फोर्स जो है वो इम्पल्स क्रिएट करी होगी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पल्स? positive. पॉजिटिव इम्पल्स क्रिएट करी होगी बिकॉज इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो पॉजिटिव p विच इज 20t, और चूंकि ये एक वेरिएबल फोर्स है तो इसका इम्पल्स आप इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन t1 विच इज 0 टिल t2 विच इज 2 सेकेंड्स. ठीक है, 0 से 2 के दरमियान 20t dt आपने इंटीग्रेट करना है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, एनी अदर फोर्स जो कि आप समझते हैं कि इम्पल्स क्रिएट करेगी एक्स एक्सिस के अलोंग? Sir, friction force and weight. Weight component. वेट का कौन सा कंपोनेंट है जो इम्पल्स क्रिएट करेगा? Sir, X component. सो W sin 30. Yes, sir. और कितना W sin 30 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं? Sir, time. टाइम के साथ. पॉजिटिव इम्पल्स, नेगेटिव इम्पल्स? Positive. Positive impulse, because W component is going to act towards the positive x-axis. Okay, what about friction force? Impulse due to this friction force, mu nc into 2. This is going to be the impulse due to this force of friction. Positive Negative. impulse, negative impulse? Negative impulse. So friction force would be creating negative impulse, and that should be equal to mv2. So this is our equation number 1. How many unknowns are there in this equation? 2. One is this V2, which is an unknown quantity. The other one is Normal force. NC, which is an unknown quantity. So it means that we need one more equation. वो कहाँ से आएगी? Sir, force is along normal to the surface. Okay, so y-axis जो हमने define की है, which is normal to this surface, उसके along या हम summation fy equal to 0 apply कर लें, या आप चाहें तो उसी एक्सिस के along प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम भी अप्लाई कर सकते हैं. चूंकि यहाँ इम्पल्स एंड मोमेंटम पढ़ लें, सो वी हैव अप्लाइड द इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल along the y-axis, which is mvy1 plus summation fy dt should be equal to mvy2. अगेन आपके पास ये दोनों टर्म्स जो है वो जीरो हो गई, जो मोमेंटम वाली टर्म्स हैं. इम्पल्स किन फोर्सेस की वजह से आएगा? वन इज दिस फोर्स nc which would be creating impulse. The other one is the component of weight which would be creating impulse. तो आपके पास एक NC की वजह से इम्पल्स आ रहा है, एक W की वजह से इम्पल्स आ रहा है. वो दोनों फोर्सेस की वजह से इम्पल्स आपने यहाँ जो है वो लिख ली है. सो सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वुड देन गिव यू द वैल्यू ऑफ NC एज वेल एज द वैल्यू ऑफ V. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिर्फ इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये जो इम्पल्स है, चूंकि एक वेरिएबल मैग्नीट्यूड फोर्स थी, तो इसका इम्पल्स आप इंटीग्रेशन की मदद से फाइंड करेंगे. ओके, सो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट. कोई क्वेश्चन आपका आज की दोनों एग्जांपल्स या प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम के हवाले से अगर कोई है तो यू कैन आस्क इट नाउ. नो क्वेश्चन. सो आज वैसे तादाद आपकी काफ़ी कम है, जस्ट 24 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग इट, सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टॉप्ड हियर. अभी हमारे पास वैसे 6-7 मिनट पड़े हुए हैं, लेकिन हम बाकी जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है वो कल करेंगे, और कल की क्लास में हम इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज भी कर देंगे, ताकि इन केस के जो स्टूडेंट्स आज की क्लास अटेंड नहीं कर सके वो कल की क्लास जो है वो अटेंड कर लें और उनको टॉपिक समझ आ जाए. ठीक है, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज क्लास.